Good evening, future officers. Welcome to EduTap and welcome to another important daily current affairs series session in which we cover the important general awareness and economic and social issues current affairs from examination point of view. I believe that your preparations are really going well for upcoming exam. And my dear friends, let me tell you that today we are going to cover the important current affairs of 12th to 14th of November 2025. If I am audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. So today's session is going to be an important one for all of you because today we are going to cover some very important notifications and the important news articles that we are required to cover from exam. Okay, so I hope that I'm audible and visible to all of you. Okay, so I'm getting some responses here that yes, I'm audible and visible. So let's start with the today's session, and let me tell you again here guys that we conduct these sessions across the 3 stages. First, we cover and revise the important aspects of the previous session through some one-liner points, and after that we complete and cover the important current affairs of the given date, followed by solving MCQs on them. Okay, we will be starting it on the similar lines. So very good evening to all the people, Rishish and all other people who have joined us live today. So before starting the session, here is a list of 12 topics that we are going to cover in the today's session. जहां पर आपका जो पहले 2 topics हैं, they are relevant for both phase 1 and phase 2. While the remaining topics are only relevant for phase 1 exam. Why? Because they are more of the general current affairs, and when it comes to the first 2 topics, they are related to your syllabus, right? So the syllabus of RBI and NABARD, and that is why they are important for both phase 1 and phase 2 exam of the RBI and NABARD examinations. I hope that everybody is having this clarity now after attending all these sessions. So basically guys, whatever the syllabus you are having for the RBI and NABARD, any current affair which is related to that syllabus, it is relevant for both phase 1 and phase 2 exam. Apart from that, the remaining current affairs are only relevant for phase 1 exam. I hope that now you will be able to understand this. Now guys, let's move on to the quick bites of the last session so that we can ensure that all of you have revised the important parts from the previous session also. Okay, let's start. So here is the very first news article, that is the G20 Global Inequality Report 2025. And we have discussed this report in a very detailed manner in the last session. Now you have to identify here, you have to tell me the name of the person who led this particular committee which created the G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on the Global Inequality. So इस कमेटी ने इस रिपोर्ट को बनाया. अब इस पर्टिकुलर कमेटी को लीड किसने किया ये आप बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर. Let's see who will give me the right answer to this question. So guys, I am expecting that everybody of you will be giving me the right answer to this question. So what exactly is the right answer? So I am getting in the responses in the chat box. The right answer is Joseph Stiglitz. So Joseph Stiglitz is the name of the person who was leading this particular committee of the G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Inequality, and this committee has released this report. Now the upcoming questions are basically on the key findings of the report. So here you have to identify the what percentage of the countries have high income inequalities according to the report. तो कितने percentage of countries के पास high income inequality है? That is 83% of the countries are having high income inequality, covering what percentage of the world's population? तो world की कितनी percent population को ये cover करता है? It covers 90% of the world's population. So guys, these are the questions across the very important lines on which question can be asked in the exam. Okay, moving to the next part. The next finding is the global income inequality remains very high with a Gini coefficient. So कितना Gini coefficient था? Gini coefficient is a measure of inequality, right? So what exactly is that value according to the report? Anybody who would like to tell me here in the chat box? So yes, right answer is 0.61. So 0.61 was the Gini coefficient, and you can see here it is on the higher end, and that shows that there is a lot of income inequality which exists in our society. Moving ahead, the richest 10% of the people earn 54% of the total global income. Very important point. Now the next part is globally dash face moderate or severe food insecurity. अब हम बात करते हैं food insecurity की, और आपको identify करना है कि कितने लोग हैं across the world who are facing the food insecurity here, meaning they often skip meals. So what is that number? That number is 2.3 billion people. 2.3 billion people face moderate or severe food insecurity according to the G20 Global Inequality Report. Moving ahead to the next important report. So one report is done. We have covered the important points from this first report.
the major important points, it doesn't mean that it is limited to these points only, because we have already discussed this report in a very detailed manner. Moving ahead to the next part is the rule of law index. तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को हमने लास्ट सेशन के अंदर अच्छे से कवर किया था, और पहला सवाल आपके लिए ये है कि इस इंडेक्स को किसने टॉप किया, किस कंट्री ने इस इंडेक्स को टॉप किया है? इट हैज बीन टॉप्ड बाय डेनमार्क. तो डेनमार्क हैज टॉप्ड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स. अगर हम बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया ने 6 प्लेसेस पोजीशन अपनी लूज की है. सो व्हाट इज इंडियाज पोजीशन नाउ इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट इन द चैट बॉक्स? So that is 86. Guys, let me tell you here, आप सभी को लग रहा होगा जो नए स्टूडेंट्स हैं कि ये कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन. ठीक है, अभी तक तो सर अभी सेशन शुरू भी नहीं हुआ, तो कैसे पढ़ा रहे हैं हम? सो बेसिकली आप देख सकते हैं ऑन द टॉप आई हैव रिटन क्विक बाइट्स ऑफ द लास्ट सेशन. तो हमारा जो लास्ट सेशन था वहां पर हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे, ये क्वेश्चंस उन टॉपिक से हैं. जस्ट टू मेक श्योर दैट वेदर यू आर एबल टू रिटेन एंड एनालाइज एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स आर नॉट. सो बेसिकली दैट्स व्हाई this particular quick bite of last session is basically been conducted for all of you, so that जिन लोगों ने अटेंड किया था, जिन्होंने रिवीजन की है, वो एनालाइज कर सके कि क्या उनको सब डिटेल्स याद है या नहीं है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. सो इंडिया की रैंक हमने देख लिया. अब बॉटम पर कौन था? विच कंट्री वॉज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स? इट वॉज वेनेजुएला. वेनेजुएला इज द राइट आंसर विच वॉज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स. नाउ द बिगेस्ट रूल ऑफ लॉ इंप्रूवर. सो गाइस, जब भी हम कोई इंडेक्स कवर करें जहां पर एक बात होती है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है, पहले क्या था, तो क्या ट्रेंड रहा, इंप्रूवमेंट हुई या डिक्लाइन हुआ, तो यहां पर जो बिगेस्ट इंप्रूवर होते हैं, बिगेस्ट डिक्लाइनर होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो हियर द बिगेस्ट रूल ऑफ लॉ इंप्रूवर वाज डोमिनिकन रिपब्लिक. दैट इज द राइट आंसर. एंड द बिगेस्ट रूल ऑफ लॉ डिक्लाइनर, दैट मीन जिसका स्कोर सबसे ज्यादा गिरा है. इससे पहले में था जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, अब सबसे ज्यादा डिक्लाइन जिसका हुआ, what is the name of that? It is Serbia. Serbia is the right answer. And I can see here in the chat box, so Rishish, Ananya, Sijagu, everybody has given the right answer. Guys, I request all other people also, please make sure that you are participating in the session, because just looking at the session, sitting relaxed, it is not going to help you out. You have to ensure that you are participating in the session, because only then it will be more productive for you. क्योंकि एग्जाम में आगे जाके आंसर्स भी करने इन्हीं क्वेश्चंस पर, है ना? तो उसके लिए अगर आप यहां पर आंसर नहीं कर पाएंगे तो वहां पर भी डिफिकल्टी फेस करेंगे. तो बेटर है कि जो गलतियां हैं, जो सीखना है, वो इन सेशन से सीखें, और एग्जाम के अंदर गलती से भी गलती हो जाए तो भी हमारा कर्सर राइट आंसर पर ही जाना चाहिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एब्सोल्युटली राइट. आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक्स की तरफ. एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज यूएन वाटर कन्वेंशन. एंड व्हाई इट वाज देयर इन द न्यूज? सो बेसिकली इट वाज देयर इन द न्यूज बिकॉज बांग्लादेश हैज जॉइन्ड द यूएन वाटर कन्वेंशन. सो बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री एंड 56th ओवरऑल टू ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन. अब दोस्तों ये है क्या? यूएन वाटर कन्वेंशन क्या है? इसको एक तरीके से समझिए. फॉर एग्जांपल, ऑन टू माय लेफ्ट देयर इज अ मैप, राइट? यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर काफी सारे ऐसे रिवर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज से आ रही हैं. यहां पर आप देख सकते हैं, है ना? तो काफी सारी ऐसी रिवर्स हैं जो दूसरी कंट्री से आ रही है. दैट मींस यहां तो मेजरली इंडिया से ही आ रही है. ठीक है, तो बाहर के देशों से जब हमारे देश के अंदर कोई रिवर आती है, तो उस रिवर का पानी हमें कितना मिले, हाउ मच वाटर वी कैन टेक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिवर एंड हाउ मच वाटर दैट पर्टिकुलर कंट्री कैन टेक, हाउ एग्जैक्टली वी कैन मैनेज the water flow of the river. So basically for that there is a set of rules which is basically called UN Water Convention, and this aims to promote cross border cooperation and sustainable water governance. तो जो पानी बह रहा है नदी में, तो बेसिकली उसकी गवर्नेंस कैसे हो, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, उसके फ्लो को हम किस तरीके से मैनेज करें, और उस पानी पर जो हक है, किसका हक कितना है, किसको कितना पानी मिलेगा, तो ये सारी चीजें इस कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है. ये कन्वेंशन मदद करती है इन ऑर्डर टू गवर्न दिस एंड मैनेज द रिवर फ्लो इन द ट्रांस बाउंड्री ऑफ द कंट्री. आई होप दिस इज क्लियर. एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड इट. So now signing up to the Convention on the Protection and Usage of Transboundary Water Courses and International Lakes would help Bangladesh safeguard and manage waterways that represent a lifeline to the peace and prosperity. So what exactly this line stands for? So guys, you can see here कि ये कन्वेंशन है ऑन द प्रोटेक्शन एंड द यूजेज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज. तो हमने बात की कि जो पानी अगर हमारे लैंड पर भी आ रहा है तो उस पर हमारा भी हक है. वी आर ऑल्सो हैविंग द राइट.
सो बेसिकली उस राइट की प्रोटेक्शन एंड द यूजेज, उस पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो इन सारी चीजों को इस कन्वेंशन के अंडर कवर किया गया। एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज हेल्पफुल फॉर द बांग्लादेश, ये कैसे इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। लेट मी टेल यू दैट इफ फॉर एग्जांपल with Bangladesh is having with India a bilateral treaty, that is the Ganges water treaty. So guys, अगर ये जो water treaty है आगे जाकर जब भी बांग्लादेश को, whenever Bangladesh wants to have some negotiation with India related to the usage of the water for these particular rivers which are flowing into Bangladesh from India, so basically it is having a strong position now. Now it is in the position of doing negotiation with India. So basically this is the power which this joining this UN convention gives to Bangladesh. So that's why it is important. And why it is more important for Bangladesh, guys, you all know that water, हम कहते हैं जल ही जीवन है, right? So water is really very important for any economy, for any country, because people are living there. So in the daily activities we need water, for agriculture activities we need water, and for all other purposes we need water. So that's why it is very, very important source for any country, and that's why everybody would like to protect it and ensure their right on the water which is flowing through their land. And this is what this particular convention is going to provide to the Bangladesh. And that's why Bangladesh have become the 56th overall country and the first from South Asia to be the part of UN Water Convention. Now UN Water Convention की बात करें, so it was originally open for only Europe and Central Asia and it was adopted in 1992. But later on in 2016, it became globally open for all the countries, right? So ये थोड़ा historical background है UN Water Convention का जो आपको पता होना चाहिए. So Bangladesh move is seen as a strategic step to gain international legal leverage in the future water negotiations, particularly ahead of the renewal of Ganges Water Treaty. I already told you ये जो Ganges Water Treaty है, so basically ये ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट? तो आगे आने वाले जब रिन्यूअल की बात आएगी इस ट्रीटी की, तो वहां पर एक बेटर पोजीशन में होगा बांग्लादेश टू नेगोशिएट विद आवर कंट्री. सिमिलरली आप सभी जानते हैं दोस्तों, इंडिया इज हैविंग विद पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी. सिमिलरली वी आर हैविंग गैंजेस वाटर ट्रीटी विद द बांग्लादेश. मूविंग एट, बांग्लादेश इज आल्सो प्रपोज्ड अ न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग 14 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स विद इंडिया. सो ऐसी टोटल 14 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स हैं जो इंडिया से आ रही हैं बांग्लादेश के अंदर. उन सभी के लिए अब यहां पर कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो सकता है और इसलिए इसने एक न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को भी बनाया है सो दैट हम उसको कलेक्टिवली मैनेज कर सकें. ठीक है, आई होप गाइस दैट दिस आर्टिकल इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. इफ यस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. तो काफी आसान तरीके से हमने इसको समझा है. यू कैन सी ऑन द मैप अगेन कि देयर आर सो मेनी रिवर्स हु आर फ्लोइंग इनटू द बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया, right? So basically that's why it is very important that we are we are managing the river flow and the water which is flowing into this particular river and flowing on our land also and coming from the other country. So that's why this particular thing has been signed. Moving ahead, coming to the UN Water Convention, the full name is Convention on the Protection and Usage of Transboundary Water Courses in International Lakes, जो हमने ऑलरेडी कवर किया. 1992 में इसे अडॉप्ट किया गया था. ग्लोबल अवेलेबिलिटी हुई इसकी 2016 में. ओरिजिनली यूरोप और सेंट्रल एशिया के लिए था. प्रमोट करता है कॉपरेशन अमंग द नेशंस शेयरिंग ट्रांसबाउंडरी वाटर बॉडीज. कोई भी लेक है, रिवर बॉडी है, जब वो सिंगल रिवर बॉडी है और वो दोनों ही बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं, दोनों ही नेशंस की, तो बेसिकली उसकी प्रेजेंस दोनों कंट्रीज में है एंड दैट्स व्हाई both the countries are having some right over it. Okay, so the territorial coverage is open to all the UN member states. So that's all the important key information about the UN Water Convention. I hope this is clear. Everybody is able to see that. Now if I ask you, now quickly tell me in the chat box. Now I am going to ask you some questions. Now please quickly give me the right answer in the chat box. First of all, quickly tell me that the UN Water Convention was adopted in which year? It was adopted in which year? 1992. It became open for all the countries in which year? In 2016. Recently, which country signed the UN Water Convention? It's Bangladesh. And Bangladesh overall became the dash country, that is 56th country to join to sign UN Water Convention. अगर हम बात करते हैं साउथ एशियन रीजन से, तो ये कौन सा देश बना? It became the first country to sign this particular water convention, right? So that's all that we are required to remember from exam point of view from this particular news article.
Absolutely right. Well done, Rishi Sharma, Ananya, and all the people who have joined, who have basically given the right answer in the chat box. This shows that you have understood the article very well from the today's session. आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे आर्टिकल की तरफ. Next article is Cooperative Kumbh 2025. Guys, you all know that we are celebrating International Year of Cooperatives in 2025. Now, the first question that comes to my mind is that what exactly this cooperative is all about. जिसके ऊपर ये कोऑपरेटिव कुंभ 2025, देखिए दोस्तों, आप कुंभ जानते ही हैं. सो बेसिकली नाउ a conference, an international level conference on the cooperatives was being established in 2025, celebrating the International Year of Cooperatives in 2025. So cooperative क्या है? So cooperative is basically an organization formed by the people who are contributing to this particular organization with some common objectives, needs. The needs can be financial, cultural, etc. Right? तो ये लोग मिलकर, and these are the people who are the contributors, and these are the people who are earning the profit also, जो profits भी लेते हैं. और इसी के तर्ज पर in our country we are having the cooperative banks in our country, right? So ये जो cooperatives हैं दोस्तों, हम इस साल Ministry of Cooperation is marking the International Year of Cooperatives in 2025. It is very important for our upcoming NABARD Grade Phase 1 exam. Please note it down. Please make sure that you are retaining this information from exam point of view. Okay. So basically, Cooperative Kumbh 2025 was organized by National Federation of Urban Cooperative Banks and Credit Societies Limited. So it's organization that is NAFCUB. It has organized this particular event. Okay. And during this event, Delhi Declaration 2025 was being signed. और Delhi Declaration basically provides the roadmap कि कैसे हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इंडिया के अंदर एक्सपेंड करें. हाउ एग्जैक्टली वी कैन एक्सपेंड द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिल्ली डिक्लेरेशन 2025. द थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस वाज डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग कम्युनिटीज. सो वी वांट टू डिजिटलाइज, we want to boost the digitalization of these urban cooperative banks. So why exactly? Because guys, we all know that जब भी हमें कोई डिजिटल मान लेते हैं कि अगर मुझे अभी कोई लोन लेना है, मुझे कोई पेमेंट करनी है, तो जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बेनिफिशियरीज हैं, राइट, जिनके पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में अकाउंट्स हैं, दे वोंट बी एबल टू डू दैट. अगर मुझे आज का अभी अपनी एफडी ओपन करनी है, मैं जस्ट फटाफट जो मेरा प्राइवेट सेक्टर का या पब्लिक सेक्टर बैंक का जो भी अकाउंट है उसके जरिए आई कैन डू दैट वेरी इजीली बाय यूजिंग द डिजिटल सर्विसेज. बट दैट्स नॉट द केस विद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. So we want to boost the technological upgradation in the urban cooperative banks, and that is why we are focusing on digitalizing dreams, empowering communities. And that's why digitalization को ही देखते हुए you can see here that 2 apps have been launched during this particular Kumbh, and these are Sahakar DigiPay app and Sahakar Digi Loan app. तो DigiPay ऐप के जरिए क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे आजकल हम कहीं पर जाते हैं, हम यूपीआई करते हैं, राइट, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज ये अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, सहकार डिजी लोन ऐप. देखिए डिजी पे ऐप में क्या था, पेमेंट फैसिलिटी थी. अब डिजी लोन ऐप में क्या होगा, डिजिटल लोन taking facility. That means it will promote digital access to the credit within the cooperative sector. तो cooperative sector के अंदर ही आपको digital access मिलेगा क्रेडिट का as a part of this particular app. तो याद रखिए डिजी पे ऐप एंड डिजी लोन ऐप. ठीक है, दो चीजें काफी जरूरी हैं आपके लिए कवर करना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल सही जवाब. आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द न्यूज. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने टारगेट किया है कि हम एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हर सिटी के अंदर लॉन्च करेंगे, which is having the population of over 2 lakh within the 5 years. That means in the next 5 years, we will be having at least one cooperative in every city with having the population of more than 2 lakhs. And over the past 2 years, हमने देखा जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो रिड्यूस हुए हैं दोस्तों. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर वो रिड्यूस हुए हैं. दैट मींस उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेटर हुई है. सो 2.8 से 0.6% हुई है. एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा दिस इंडिकेट्स दैट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन आवर कंट्री हैज इंप्रूव्ड एज पर द प्रीवियस सिनेरियो, राइट. इसके अलावा देयर आर सम सर्टेन गोल्स. सो सबसे पहले हमें इन डेटा को याद करना है कि 2 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन वाले हर सिटी में वी विल बी हैविंग वन कोऑपरेटिव.
in the upcoming 5 years. That is the first part. Last 2 years we have seen that non-performing assets values for the urban cooperative banks has reduced, and that shows that improved financial health of the urban cooperative banks. So basically that's how we are going to work on them. And the third important thing is the goals which are being set up by the ministry for the urban cooperative banks, and these are promoting generation सहकार by connecting youth to the cooperative movement. तो हमारा जो देश का युवा है उसको कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जोड़कर हम जनरेशन सहकार को प्रमोट करना चाहते हैं. देन वी आर हैविंग रेजिलिएंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वेयर वी आर एस्टैब्लिशिंग एन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नेटवर्क. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक नेटवर्क को हम एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं. वी विल एम्पावर वनरेबल कम्युनिटीज एंड प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. जो वनरेबल कम्युनिटीज हैं वी विल बी प्रमोटिंग देम. वी विल आल्सो एंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, and that's why these are the 4 goals that the ministry has stated during this particular event. Okay, apart from that guys, let me tell you that to address the educational needs in the cooperative sector, we are having a Tribhuvan Sahakari University also. So we are having Tribhuvan Sahakari University in order to address the issues that we are having the educational needs in the cooperative sector. That's why we are having this particular part. I hope this is clear to everyone. ओके, सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया दोस्तों. सबसे पहले हमने कवर किया ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? नैफकब ने ऑर्गेनाइज किया. इसके दौरान कौन से डिक्लेरेशन को साइन किया गया? विच डिक्लेरेशन वाज साइंड? इट वाज दिल्ली डिक्लेरेशन 2025. What is the reason behind that? A roadmap for the expansion of urban cooperative banks. Then 2 apps have been launched by the ministry during this particular part. ठीक है. So yes, the umbrella organization, so Rishish, the umbrella organization is NAFCUB only which has launched this particular 2 digital platforms. The one is the DG Loan app and the other one is DG Pay app. I hope your doubt is clear. Okay, moving ahead, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने एक टारगेट सेट किया 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज में वी विल बी हैविंग 1 कोऑपरेटिव, राइट? So that's all from this particular part. Now moving ahead, some other important points related to this article. So recently a particular ranking was been launched by the International Cooperative Alliance where it has placed Amul and IFFCO on the top, right? So Amul was ranked first and IFFCO was ranked second globally by the International Cooperative Alliance in its particular ranking. Coming to the NAFCUB, so ये एक एपेक्स लेवल प्रमोशनल बॉडी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज के लिए, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड दिस कोऑपरेटिव कुंभ 2025. Now it is registered as a multi-state cooperative society since 1977. So we are talking about the NAFCUB here. So guys, with this we are done with all the important details that we are required to cover related to the cooperative kumbh 2025. Let me tell you that ये आपका ESI का भी पार्ट है और ये आपका फाइनेंस करंट अफेयर्स का भी पार्ट है. तो एक वो टॉपिक भी हमने आज के सेशन में कवर कर लिया है बिकॉज बैंकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ RBI के लिए तो है ही और नाबार्ड के एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वाला पार्ट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इफ इट इज क्लियर प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स दैट यस द 2 आर्टिकल्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 both of them are clear to us and now we are ready to move on to the next article of the today's session. So हमने दोनों ही चीजों को अच्छे से कवर कर लिया, रिटेन कर लिया है. अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले आर्टिकल की तरफ. Now the next article is Center of Excellence. So recently Center for Development of Telematics have signed an MOU for the setting up of Center of Excellence. Now where exactly the Center of Excellence will be set up? So basically it will be set up in IIT Gandhinagar and that's why this MOU has been signed by C. with the IIT Gandhinagar only. The objective is very simple that we want to set up Center of Excellence and this will induce and boost indigenous research, innovation and product development in the telecom and cyber security domains. तो हमारी कंट्री का जो टेलीकॉम डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी डोमेन है, वहां पर इंडिजिनस रिसर्च, राइट? दैट मींस द रिसर्च व्हिच इज ओनली क्रिएटेड इन इंडिया, इंडिजिनस है जो इंडिया को, राइट? सो इंडिजिनस रिसर्च, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सो इन सभी चीजों को बूस्ट करने के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा इंडिया के अंदर. एब्सोल्युटली राइट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. सो द 93rd इंडियन एयरफोर्स डे, माय डियर फ्रेंड्स, 93rd इंडियन एयरफोर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of October इन आवर कंट्री. तो 8th October को ये सेलिब्रेट किया गया था commemorating the establishment of Indian Air Force in 1932. Guys, we all know that Indian Air Force is India's defense force which has been established in 1932 for the protection of Indian skies, right? So basically this year the foundation day of the Indian Air Force was established with the theme
infallible, impervious and precise. Infallible, impervious and precise, which stands for achuk, abhed, was satik. That is the right answer. Okay, I hope this is clear. So guys, when it comes to the Chief Air Marshal of the Indian Air Force, that is who is the head of the Indian Air Force? Can anybody tell me that? So he is the Chief Air Marshal Amarpreet Singh. You can see him in this particular image, right? Now one question that I am leaving for you, that is the motto. This is your homework question. You have to tell me that what is the motto of Indian Air Force. Okay, तो ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे कि मोटो क्या है इंडियन एयरफोर्स का. ओके, आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ. डेट याद रखिए 8 अक्टूबर 1932 when we celebrate Indian Air Force Day. Moving at G20 Global Inequality Report. So guys, basically just ignore this particular heading here, right? So basically here the important part is the United Nations Tourism Organization की नई हेड यहाँ पर अपॉइंट हुई है. What is the name of the person? It's Sheikha Nasir Al Noais, who has been appointed as the next Secretary General of UN Tourism. So एक नया रिकॉर्ड बनाया. इसकी जो 50 इयर्स की जो हिस्ट्री है ऑर्गेनाइजेशन की, पहली बार एक विमेन सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया गया, एंड दैट इज शेख नसर अल नोएस ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. शी विल बी टेकिंग द ऑफिस इन जनवरी 2026 एंड शी विल रिप्लेस जुराब. ओके, तो जुराब को ये रिप्लेस करने वाली हैं, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज शेखा नसर अल नोएस. दैट इज द राइट आंसर. शी इज फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स and she is the first woman secretary general of the United Nations Tourism. बिल्कुल सही. So आगे बढ़ते हैं. शीतल देवी, guys, I'm really inspiration for the whole nation, right? So many times in our life we just crib about the things that we are not having, but she is the real inspiration. You can see here that coming from the differently abled world, the world champion para archer Sheetal Devi has become the first athlete from India to be selected to represent the nation in a able-bodied competition. That means जो able-bodied competition, जो able-bodied team है इंडिया की, उसका हिस्सा बन गई हैं differently abled Sheetal Devi, and she is really an inspiration for the entire country and for all of you who are really thinking that basically we are not having this, we are not having that. Guys, just see her, right? She was also the gold medalist and she became the first person without arms to win the gold medal recently, है ना? So basically she has made history by qualifying for the Indian able-bodied junior team for the first time for the upcoming Asia Cup Stage 3, which will be taking place in Saudi Arabia. So she has qualified for compound team along with the Tejal Salve, and earlier in 2025 she became first female armless world champion and awarded the Arjuna Award in 2023, India's second highest sporting honor. So a lot to learn from her and lot to learn and understand from her, her commitment, her dedication that we also want that you should show when you are preparing for a dream officer exam, be it the RBI grade B officer exam, NABARD grade officer exam or any other XYZ exam. Make sure करना चाहिए हमें कि हम भी इसी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें. ठीक है. So ऋषिश ने बिल्कुल सही आंसर दिया होमवर्क क्वेश्चन का. दैट इज द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. दैट्स रियली ग्रेट ऋषिश, वेल डन. आगे बढ़ते हैं गाइस, बट रिमेंबर शीतल देवी. Moving at India's first ever women's wellness on the wheels vehicles. So this is an initiative which will be launched by Tamil Nadu, and Tamil Nadu, with the help of this initiative, it wants to protect the women of the Tamil Nadu from the cancer, and that is why a mobile healthcare initiative which is aimed at early detection of women specific cancers will be run by the Tamil Nadu government. So 38 vehicles को 38 districts के अंदर run किया जाएगा so that we can do early detection of the women specific cancers. So this initiative has been launched by which state? Quickly tell me in the chat box. What is the name of that state? The state name is Tamil Nadu. Absolutely right. Moving ahead, exercise Winbacks. So the 6th edition of India-Vietnam Army exercise Winbacks has commenced in Hanoi. So guys, ये इंडिया और वियतनाम के बीच की एक एक्सरसाइज है जिसको रिसेंटली हनोई के अंदर कमेंस किया गया, और एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर इंटरऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस. सो दोस्तों, यू ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी पीस कीपिंग ऑपरेशंस व्हिच आर रन बाय यूनाइटेड नेशंस, और वहां पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सके. दैट्स व्हाई दिस बायलैटरल एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, वेयर बोथ द कंट्रीज आर शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस. ओके, एब्सोल्युटली दिस इज द राइट पार्ट.
Moving ahead, 2025 Booker Prize, and you can see here the Canadian, Hungarian, British writer David Zeliff, who has been recently given the 2025 Booker Prize for his novel Flesh. So what is the name? Right answer. The name of the person who has been given the Booker Prize, that is David Zeliff. डेविड ज़ैली को अवार्ड मिला है कौन सी बुक के लिए, कौन से नॉवल के लिए? दैट इज फ्लैश। तो इसके अलावा दोस्तों आपको एक नाम दिख रहा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने आरबीआई का एग्जाम दिया था वो इस नाम को भली भांति जानते हैं, दैट इज लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। तो उसके ऑथर का नाम पूछा था एग्जाम के अंदर, दैट इज किरण देसाई। एंड ये भी एक ऐसी बुक थी जिसको नॉमिनेट किया गया था बुकर प्राइज के लिए, इसलिए ये न्यूज के अंदर थी और इसीलिए क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। नाउ अगर हम बात करें बुकर प्राइज की, तो 1969 में इस प्राइज को इस्टेब्लिश किया गया एंड इट इज अवॉर्डेड बाय द बुकर प्राइज फाउंडेशन। सो इट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस द फाइनेस्ट सिंगल वर्क ऑफ सस्टेन्ड फिक्शन। सो गाइज, जो लोग किताबें लिखते हैं, राइट, फिक्शन राइटिंग करते हैं इंग्लिश के अंदर, सो बेसिकली और यूके आयरलैंड के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है, उन लोगों को इसके लिए सम्मानित किया जाता है विद द बुकर प्राइज। रिवॉर्ड दिया गया है 2024 के अवार्ड थे ब्रिटिश ऑथर समांथा हार्वे फॉर बुक ऑर्बिटल, और साथ साथ कैनेडियन हंगर ब्रिटिश राइटर डेविड ज़ैली को मिला है इस साल अवार्ड फॉर फ्लैश। बिल्कुल सही गाइस, और इसी तरीके से आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर करते रहिए। दैट विल बेसिकली एंश्योर दैट यू आर एबल टू रिटेन, रिवाइज एंड रिकॉल दिस इंफॉर्मेशन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम व्हिच इज वेटिंग फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड। So People First Integration Award has been awarded to which state? Himachal Pradesh, for its outstanding achievement in integrating citizen-centric services. So guys, let me tell you that Himachal Pradesh state government has integrated so many state government services with the DigiLocker, and recognizing this effort, that's why this particular award has been provided, has been given to Himachal Pradesh, awarded by Minister of Electronics and Information Technology. Guys, DigiLocker के बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ही लॉन्च किया था अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली स्टोर करके रख सकते हैं, दे आर बेसिकली लीगली वैलिड, राइट। सो इट इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द इश्यूएंस, स्टोरेज एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो जिन लोगों ने अभी आरबीआई का, नाबार्ड का, सेबी का फॉर्म फिल किया होगा, इवन दे हैव आस्क्ड यू दैट अगर आपके पास डिजी लॉकर है, आप यूज करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टिक दैट बॉक्स सो दैट आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम वेरीफाई कर सकें, है ना। तो इसीलिए हमें आज के टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है इफ दे आर ऑन द डिजी लॉकर, एंड दैट्स रियली गुड पार्ट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट व्हिच हैज बीन गिवन द पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड? दैट इज हिमाचल प्रदेश। मूविंग एट, 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड हैज बीन गिवन टू Gurudev Sri Ravi Shankar, the founder of the Art of Living Foundation. He has been given this award for his efforts for disseminating the peace across the world, right? So अपने peace keeping initiatives के लिए इनको award दिया गया, नाम है गुरु श्री रवि शंकर। It is awarded by Boston Global Forum and the AI World Society. Absolutely, this is the right answer. Global peace को promote करने के लिए award इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चेयरमैन ऑफ एफएआई। सो एस शंकर सुब्रमण्यन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाई वी आर डूइंग दिस? गाइस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस शंकर सुब्रमण्यन किसको रिप्लेस करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। ही विल बी रिप्लेसिंग शैलेश सी मेहता। एंड एस शंकर सुब्रमण्यन की बात करते हैं तो ही इज प्रेजेंटली द एमडी एंड सीईओ ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल, और एफएआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट रिप्रेजेंट्स द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर। तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी हमारे नॉन प्रॉफिट एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी है ये, तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करती है, राइट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एफएआई? दैट इज एस शंकर सुब्रमण्यन। Absolutely right, this is the right answer, guys, well done. Now we are done with all the important MCQs from the today's session, and now it's the time to make sure. Now till now I was giving you the information, right? I was telling you that okay, this is the news article, that's what we need to understand, that's what we need to cover. Now it's your time to show me that what you have learned, what you have understand in this particular session. Are you guys ready? Because see, in the examination you are required to answer the MCQs only in the exam, and that is where we are required to ensure that yes, we are going ahead with it. Okay,
So now I'm starting asking you the question. Make sure that you are giving your answers in the chat box. The first question is on a very simple line. The question is on Indian Air Force celebrates establishment every year on which date, and the theme for the recent commemoration was dash. So what is the date? What was the theme? That's what you have to identify. What is the date? 8th of October, and the theme is infallible, impervious and precise. Option B is the right answer. So yes, option B is the right answer to this question. I can see in the chat box, so many people have given me the right answer. That really shows your understanding level, that yes, you are able to understand and recall this information. Next question. Institution which has signed an MOU with the Center for Development of Telematics for the establishment of Center of Excellence. What is the name of that institution? Again, it is a halwa question for all of you. It is IIT Gandhinagar, option D. Next question. Now this question is going to little bit impact you. So Cooperative Kumbh 2025 conference पे question है, and I told you that what is the way to solve these questions. सबसे पहले we need to identify the three-step formula. What are the three-step formula here? First of all, we need to identify the central topic. Then we need to identify demand of the question. Demand of the question is to identify the correct statement, and the third part is analyzing the keywords, and then see that which of them are mentioned correctly. So the first statement says the event was organized jointly by NAFCB and the Ministry of Cooperation. Second statement, Delhi Declaration outlines a roadmap for strengthening rural cooperative banks. Guys, पूरे सेशन में हमने रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स की बात ही नहीं की, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है? बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. थर्ड स्टेटमेंट, सहकार डीजीपे ऐप to help urban cooperative banks offer digital payment services. Is it right or wrong? This is absolutely right. So right answer will be option B, that is 1 and 3 only. बिल्कुल सही जवाब. Everybody has given the right answer to this question number 3. That is option B. Well done, Ananya, Rishish, and all other people who have given the answer correctly here. Now moving on to the homework question, guys. अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ठीक है अभी उन्होंने आंसर नहीं किया किसी क्वेश्चन का, बट दोस्तों आपके लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं. इस सेशन को पूरा कवर करने के बाद आप इस क्वेश्चन पर आना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना. And do make sure that you are attempting the question by giving the answer in the comment section. Okay. So here's the question which is on the Bangladesh association with the United Nations Water Convention. आपको identify करनी है correct statement. So make sure that you are giving me the answer to this question in the comment section. Okay. After revising the session completely. So here is the homework question from the previous session. The homework question was on the Rule of Law Index 2025. And the right answer to this question was option D, that is 1 and 3, as the statement 2 was incorrect here. So guys, क्योंकि question था आपका most significant improvement के ऊपर, but ये तो decline था. सबसे ज्यादा decline सर्बिया का हुआ है, सबसे ज्यादा improvement डोमिनिकन रिपब्लिक की हुई, right? So that's why this statement is absolutely incorrect. And the people who will be giving me the right answer to the today's homework question, they will be the star performers like these people. If you want your name to be mentioned here, make sure that you are giving me the right answer in the chat box. So here, Harish, Pushpa, then we have Pranathi, Suraj, Lunatic, Suspin, Ananya, Agree, Sixth Sense, Prakriti, Abhirup Das. So all these people are the star performers for our today's session, guys. So that is something which is an achievement for all of you. And let me tell you that बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर नाम लेकर हमें क्या करना है. दोस्तों यहाँ पे नाम आएगा, रोज आएगा, बार बार आएगा. इससे क्या होगा? आपकी एक हैबिट बनेगी, राइट? आप एक मोमेंटम में आएंगे. और व्हाट वी आर टारगेटिंग इज कि आपका नाम बस यहां ना आए, बल्कि जो मेरिट लिस्ट आती है वहां पर भी आए. उसके लिए ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी सीढ़ी है. अगर आप चाहते हैं इसको चढ़ना हमारे साथ तो चढ़िए, अदरवाइज द रेस्ट इज योर कॉल. ओके, सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल दीज पीपल. एंड गाइस, फॉर द रिवीजन ऑफ द सेशन यू विल रिक्वायर पीडीएफ ऑफ द सेशन. पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर. सो यू कैन जस्ट गो टू द टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ, बट इट विल बी ओनली अवेलेबल within 24 hours. अभी नहीं मिलेगी, within 24 hours आपको मिल जाएगी पीडीएफ. ओके, so that's all from the today's session. I hope that this session was really useful and fruitful to all of you. And you can also tell me that if there was some shortcomings in the session, or you didn't found something good. So guys, you can definitely let me know in the chat box by commenting in the comment section, so that we can work on it and we can definitely make it more productive for all of you in the upcoming sessions, right? So if you are having any queries, any kind of query related to exam preparation, to the current affairs, you can feel to ask here, or you can also mail it to us at hello@edutap.co.in. You can call us at 8146207241.
And let me tell you guys, it is very, very important that you must be having a smooth journey for becoming the next officer. And there in this journey, we just want to add some our contribution by clearing all your doubts that are, there in your mind, which are acting as an obstacle. So we can do this only from our part, but for that you have to share your queries and your things which are not going good. Okay, so now I'll be meeting you in the next